Hi and welcome back to my channel Grow with Dilip. Interesting day in the markets today. मुझे लग रहा था बहुत थकेला दिन है, but I was not looking at the indices as such. I was looking at just my stocks which I bought today. Two of them which I've shared on this channel earlier as well, but I'll share them today as well. But overall market तो ज़्यादा ख़राब था, so I think I did pretty well today considering that. So yeah, let's dive in and I'll share those two stocks with you. सो अगर हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स देखें तो दोनों 1.5% डाउन था और आईटी तो और भी ज़्यादा 2.39% डाउन दिखा रहा है. सो आई डोंट नो इफ़ इट्स बिकॉज ऑफ दी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं लग रही है, काफ़ी सेलिंग लग रही है, इतनी आ रही है तो इस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ख़राब था. बट माई स्टॉक्स डिड प्रीटी ओके कंसिडरिंग दैट, सो आई शेयर देम विथ यू. लिक्विडिटी पोजीशन देखें तो एफ आई आई बेयरली 7 करोड़ कल बाय की और डी आई आई 0 करोड़ दिखा रहा है. आई डोंट नो इफ दीज फिगर्स आर ओके, बट एनीवेज मतलब कोई नोटिसेबल ट्रेंड नहीं है. बट द टू स्टॉक्स दैट आई एडेड टुडे आर Karur Vyasa Bank and Dixon Tech. So Karur Vyasa Bank I had around 230 levels and I added a large quantity today. Uh, Around these levels only 240 के करीब I guess. Or Dixon Tech I bought at a higher level around 15,900 levels, which was the high. 15,000 पूरा 16,000 ही पकड़िए. So I added this two today and they were Karur Vyasa Bank और ये relatively मतलब जहाँ मैंने लिया है वहीं close हुआ है. So these two look good to me and I've been sharing it. And another stock which I shared yesterday, Aditya Birla Sun Life, which I thought will stall, corrected by our profit booking I 0.96%. So but still holding strong surprisingly. So yeah, pretty good because I think the valuations abhi almost आ गए हैं. So let's see the two that I bought today. करूर व्यासा बैंक अगर हम देखें तो आप देखोगे इसमें अच्छा बाइंग आया हुआ एंड इट क्लोज नियर द हाइज. द हाई वॉज 240 और 239 के करीब क्लोज हुआ है, 3.5% 4% के बीच में, और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे. तो आई एम expecting good follow-up action tomorrow and this or in the coming few days. वॉल्यूम भी आप देखोगे way above the average, right? अगर देख रहे हो इधर 200% अप है, so considerable interest. And the reason is it has been performing consistently, आप जैसे देखोगे, and the P is a reasonable 10, right? So very few stocks which are available at such ratios, although future का growth दिखा रहा है around 8%. बट पी भी इतना ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, राइट? सो स्टिल सम इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, पीपल आर बाइंग इट. इट इज़ हेल्ड बाय झुनझुनवाला फैमिली एज वेल and a lot of other mutual funds. So safe stock which can be looked at. And the other one which I added today is Dixon Technologies. इसमें क्योंकि आई थिंक हाई प्राइस स्टॉक है तो धीरे धीरे बाइंग आ रही है. वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं थे बट आई एडेड दिस प्रीएम्प्टिवली. सो एक्चुअली मैंने इस पर एक अलर्ट लगा के रखा था एंड दैट अलर्ट वेंट ऑफ एंड आई जस्ट एडेड इट. वॉल्यूम्स इतने नहीं आए बट आई थिंक इट्स ओके. इट्स कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज, सो इट विल गिव अ ब्रेकआउट सूनर और लेटर एंड आई एम होपिंग इट्स ऑन द अपसाइड रादर देन द डाउन साइड. जैसे दिख रहा है इसकी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर सप्लाई कम हो गया है तो बहुत ही अच्छा जंप आना चाहिए. So let's see how that pans out. But the only problem I see here is it's expensive. So I don't know if people would be interested or the funds would be interested in buying, but we'll come to know in a few days or weeks. And the expected growth is also around 66, which is not as high as the P commanded, but very few stocks which are showing this kind of growth, right? So uska premium milta hai usually. So let's see how that pans out. So these are two stocks that I wanted to share with you today, Dixon and Karur Vyasa Bank, which I've added in my portfolio. And the third one that I also hold is Aditya Birla Sun Life AMC. So these are my top 3 picks currently. And they all hit a 52-week high today. So let's see how they pan out tomorrow and next week. And I'll keep you guys updated. If you are new to the channel, do consider subscribing. If you have any questions around these, do let me know. And yeah, that's it for today. I'll see you guys tomorrow in the next video. Bye bye.